Hello, students. Welcome back. I am Ravi and I am your verbal ability and soft skill trainer. And today we will discuss the most important module of our parts of speech, module 3, that is adverb and prepositions. All right. So, in this module, we will get the core concept of adverbs and prepositions. Okay. And after uh, discussing these two, you will be able to solve the exercises as well as you will be very much ready for your competitive examinations and other academic examinations. So let's start with the slides and let's start with the topic. Okay, now the topic is adverb and preposition. Okay, what is an adverb? Let's start with the adverb first. What is an adverb? So, adverbs are nothing but the words that tells us something about verb, an adjective, or some other adverbs in a sentence. Okay? और दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो उनके मीनिंग को मॉडिफाई करें, जो उनके बारे में हमें बताएं, जो उनके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल से इंफॉर्मेशन दें, दैट इज नोन एज एडवर्ब. सो लेट्स see the definition. A word that modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb is called an adverb. वो words जो verb की meaning को, verb adjective की meaning को या किसी दूसरे adverb को उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं या उसकी मीनिंग में कुछ एड ऑन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. द कुक प्रिपेयर्स डिशेस क्विकली. जो कुक है वो डिशेस मतलब खाना बनाता है. कैसे बनाता है? क्विकली. नाउ इन दिस सेंटेंस द वर्ड क्विकली adds something to the meaning of this verb called prepares. Prepares is a verb. Okay, now here the word quickly is modifying, it is telling something more about the word prepare. How does a cook prepare? He prepares the food or the dishes quickly. वो जल्दी जल्दी dishes को तैयार कर देता है. तो ये जो quickly है, here is an adverb as it defines a verb. Next sentence is he is a very fast runner. Okay, वो बहुत तेज दौड़ने वाला रनर है. He is a very fast runner. So very fast is a, again very is a word which is describing fast, which is telling something more about to the meaning of the fast. Fast is an adjective, right? Which is defining what kind of runner he is. Okay, now again the fast is defined by the word very, which means he's a very fast runner. Very fast means बहुत तेज दौड़ता है. तेज दौड़ता है मगर कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है. So again we can say that very is an adverb. Next sentence, if we see, the guide spoke extremely slow. All right, now here speaking is an action which is done by the guide. All right, and as we know from the definition of the verb that it adds something to the meaning of verb. So how does the guide spoke? Guide spoke slow. Okay, he is speaking slow, but here the word extremely is used in order to emphasize on the kind of his quality of speaking. That is, he is speaking slow but extremely slow. Not only slow but extremely slow, right? So we can say that extremely word is nothing but an adverb which is defining again or adding something to the meaning of the adverb slow. All right. So I hope we are clear till here. Let's have a look at the types of adverbs. Now, the very first we have is adverbs of manner. जो पहला हमारे पास adverb का category है वो हमारा adverb of manner है. It shows the manner in which the action of the verb is shown. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें ये बताता है कि एक्शन जो है वो किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन मूव्ड स्लोली, ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, ठीक है, द ट्रेन मूव्ड स्लोली, सो हाउ डिड इट मूव्ड, इन व्हाट मैनर, it was moving slowly. So again, slowly is describing about the movement of the train. It is telling something more about the movement. What kind of movement was it? It was a slow movement. So slowly here is a adverb of manner. In the next sentence, we see he reads clearly. He reads, he's reading. Reading is again a verb. Okay. So, how does he read? In what way? In what manner he reads? He's reading clearly. वो बहुत ही साफ साफ पढ़ता है. So, clearly is another adverb of manner which is telling you about the manner in which the action of the verb is being performed. लास्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द डॉग बार्क्स लाउडली. नाउ हाउ डज द डॉग बार्क्स, इन व्हाट मैनर इट इज बार्किंग, इट इज बार्किंग लाउडली, ठीक है, तो वो जोर से भौंक रहा है, कुत्ता जो है वो जोर से भौंक रहा है, सो इट इज बार्किंग लाउडली. इट इज अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ब बार्क and the manner in which it is being performed, that is loud manner. So loudly again is the adverb of manner. So I hope we are done with adverb of manner. Let's take the next one, adverb of place. Again, this is also very important, the second type of adverb. Now this denotes the place to which the action of the verb refers to. ये उस जगह को बताता है जहां पे एक्शन होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है, ठीक है. सो इट डिनोट्स प्लेस टू विच द एक्शन ऑफ द वर्ब रेफर्स टू, राइट. इट डिनोट्स द प्लेस, ये उस प्लेस के बारे में हमें जानकारी देता है जहां पे वो एक्शन परफॉर्म होगा या होने वाला है. एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैंड हेयर. ओके, स्टैंड हेयर, यहां खड़े हो जाओ. तो यहां पे जो हेयर वर्ड है, इट इज टेलिंग यू अबाउट अ पर्टिकुलर पोजिशन, अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेस वेयर आई वॉन्ट यू टू स्टैंड. सो इफ आई से स्टैंड हेयर or I am standing here, so I am telling you my specific position as to at what place or where exactly I am standing. So here is the adverb of place. Next sentence हम देखते हैं, go there, वहां जाओ, go there, वहां जाओ. तो वहां जाने के लिए क्या कह रहा है, there it is indicating a specific position where the person has to go. It is indicating a very specific position as to where one wants you to go. So if I say go there, it means you move from here and you go to that place. So there again is a word which is adverb of place, as it is telling you something about a specific position where the action is going to take place. Next is walk backward, पीछे की तरफ चलो. Walk backward, पीछे की तरफ चलो. So backward is a word which denotes the place to which the action of the verb is being performed. So ये वो वर्ड है जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि वर्ब का एक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, किधर हो रहा है या कहां स्पेसिफिक प्लेस पे हो रहा है. So that is why this backward is nothing but adverb of place. So adverb of place is the word here, there and backward, as it denotes the place to which the action of the verb takes place, right? Let's have a look at the next type of verb. Now the next verb, adverb, is adverb of time. It is adverb of time. It reveals the time of action pertaining to the verb. It reveals the time of action. ये वो टाइम बताता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें, वी लुक एट द एग्जांपल्स. आई सोल्ड माय कार येस्टरडे, मैंने अपनी गाड़ी कल बेची. सो आई कैन आस्क यू क्वेश्चन, व्हेन डिड आई सोल्ड माय कार, मैंने कब बेचा. व्हेन, द क्वेश्चन इज व्हेन, टाइम की बात की जा रही है. द वर्ड येस्टरडे डिफाइंस द एक्शन, कि ये काम कल हुआ था, मैंने अपनी कार कल बेच दी थी. तो कल के बारे में हम बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहे हैं. अगेन द वर्ड येस्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज रेनिंग सिंस 6 a.m. It is raining since 6 a.m.
सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। तो कब से हो रही है? वी आर स्पेसिफाइंग अ वेरी स्पेसिफिक टाइम। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम कि 6 बजे से ही हो रही है, 3 बजे से, 2 बजे से या 1 बजे से रात के नहीं हो रही है, सुबह 6 बजे से हो रही है। सो जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो वहां हम सिंस का यूज करते हैं, राइट? So since here is again adverb of time, right? Because it is specifying a very particular time at which the raining started. Next here, today he arrived late. आज वो देर से आया. Today he arrived late. आज वो देर से आया. तो देर से आया किस चीज के बारे में? देर का मतलब समय पे नहीं था वो. अगेन फिर यहां समय की बात की जा रही है. When did he arrived? कब आया? देर से आया, लेट आया. तो अगेन द वर्ड लेट डिनोट्स एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, इट इज द टाइम ऑफ एक्शन पर्टेनिंग टू द वर्ब. वो टाइम जब वर्ब का एक्शन होता है, ठीक है, या जब वर्ब टेक्स प्लेस होता है, या जो कोई एक्शन रिपीट होता है या होता है, तो उस टाइम के बारे में बात कर रहा है. ये तीनों जो वर्ड्स हैं, यस्टरडे, सिंस एंड लेट, these words are known as adverbs of time. I hope I'm clear till here. Let's move on. Next we have adverbs of frequency. वो वर्ड्स जो हमें किसी चीज के बारे में बताएं, किसी एक्शन के बारे में बताएं, हाउ ऑफन इट इज बीइंग परफॉर्म्ड और हाउ ऑफन इट इज बीइंग डन और हाउ ऑफन इट इज रिपीटेड. व्हाट इज द frequency of an action? Okay, so if the definition says these adverbs denote low frequently or how often the action is being done or repeated. So ये वो adverbs है जो हमें denote करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कितनी बार या कितनी दफा, कब कब कोई एक्शन होता है या उसको रिपीट किया जाता है. अगेन द डेफिनेशन सेज these adverbs denote हाउ फ्रीक्वेंटली कितनी बार और हाउ ऑफन कितनी जल्दी जल्दी द एक्शन इज बीइंग डन और रिपीटेड. एक्शन को किया जा रहा है या उसको रिपीट किया जा रहा है. तो वो वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. आई हैव टोल्ड यू थ्राइस. मैंने तुम्हें 3 बार बोला है. हो सकता है मैं कोई बात बोल रहा हूं किसी को, वो नहीं सुन रहा है, मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार बोला. तो ये जो 3 है, द वर्ड थ्राइस रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. अगेन, सो इट इज टेलिंग द फ्रीक्वेंसी और द ऑफन द एक्शन इज रिपीटेड, हाउ ऑफन द एक्शन इज रिपीटेड और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन. So thrice is 3 times it has been repeated. I have already informed you 3 times, right? Next is if I say how often make he often makes mistakes. He often, वो प्रायः गलतियां करता है, मतलब अक्सर गलती करता है, वो बार बार कहता है, बार बार करता रहता है, बार बार करता है, अक्सर करता है. So he often makes mistake. Now again this word often refers to the repetition of the action or the frequency of the action which is being done. कितनी बार एक्शन हो रहा है. तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बार बार. तो वो बार बार गलतियां करता है. अगेन दिस वर्ड ऑफन इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लास्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज वर्क ऑन टाइम. वो हर बार अपना काम समय पे करना चाहता है या समय पे करता है. He always tries to do his work on time. वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना काम समय पे फिनिश करे, समय पे खत्म करे. ठीक है. सो ऑलवेज इज अगेन रिपीटेड एक्शन. वो बार बार रिपीटेड एक्शन कर रहा है ताकि अपना जो वो टाइम है, अपना जो काम है, वो समय से खत्म कर सके. राइट. नाउ दिस वर्ड ऑलवेज is referring to the frequency of the action which is repeated. This is referring to the offenness or the frequency, how often or how frequent the action is repeated. So he always tried to complete his work on time. वो हमेशा अपना काम जो है समय पे कर लेता, हमेशा. वो कभी मौका नहीं देता है कुछ कहने के लिए. एवरी टाइम. ओके, सो इट इज हिज हैबिट. उसका हैबिट है. Always he tries to finish his work on time. So he is
दिस थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वो बार बार अपना काम जो है वो समय पे कर लेता है, फिनिश कर लेता है. सो द वर्ड्स लाइक थ्राइस, ऑफन, ऑलवेज, these words are known as adverb of frequency. Let's have a look at the next one. Adverb of degree की हम बात करते हैं. Right now, what is adverb of degree? This adverb defines the extent or the degree of action of the verb. ये चीज बताता है, ये adverb ये बताते हैं कि कोई एक्शन किस हद तक हो रही है या कितना हो रहा है. What is the extent of the action? Right? For example, he is too careless. वो बहुत ज्यादा केयरलेस है, लापरवाह है, बहुत ज्यादा. किस हद तक है? बहुत ज्यादा. So the word too is adverb of degree. To what extent he is careless? He is too careless. Right? नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, आई एम फुली प्रिपेयर्ड. अगर मान लीजिए मुझे एग्जाम देने जाना है और मुझसे कुछ कोई पूछता है कि व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल, एंड इफ आई से आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं. सो टू व्हाट एक्सटेंट आई एम प्रिपेयर? आई एम फुली प्रिपेयर्ड. चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. राइट? रेडी फॉर ऑल. सो आई एम फुली प्रिपेयर्ड हियर अगेन denotes or indicates the degree or the extent to which the action is done or to which the action of the verb reflects. Again, fully is the adverb of degree. तो ये जो वर्ड है fully, इसको हम फिर adverb of degree बोल सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम कहें, these mangoes are almost ripe. ये जो मैंगोज हैं ये लगभग राइप हो चुके हैं. ऑलमोस्ट मतलब लगभग. राइट? टू व्हाट एक्सटेंट? लगभग पक गए, मतलब ये खाने लायक हो चुके हैं. ठीक है? सो अगेन द वर्ड हियर ऑलमोस्ट इज नथिंग बट द एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो ये सब जो वर्ड्स हैं जैसे टू, फुली, ऑलमोस्ट, these words are known as adverbs of degree. They denote to what extent the action of the verb is taking place. I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. It is clear. The concept is quite clear. Okay, these are very simple things. Okay, let's move on with prepositions. Now, what are prepositions? Preposition किसे कहते हैं? Preposition देखिए दो शब्दों से बना है, pre and position. Pre मतलब पहले, before, and position मतलब place. तो पहले प्लेस किए जाने वाले वर्ड को हम preposition बोलते हैं. और ये किसके पहले प्लेस किए जाते हैं? So, according to the definition, it says preposition is a word which links noun, pronoun, adjectives, verbs, and phrases to other words in a sentence to form a proper sentence. या हम बोले preposition वो words है जो noun, pronoun का relation सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स या पार्ट के साथ दिखाता है. राइट? सो इट इज एनी वर्ड विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, इवन एडजेक्टिव, वर्ब्स या फ्रेजेस को इनके रिलेशंस एक दूसरे में दिखाते हैं, शो करते हैं. इनके रिलेशंस, लिंक्स बताते हैं कि किसका किससे क्या लिंक है, किसका किससे क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, I want to purchase new clothes for my entire family on the coming Sunday. मैं खरीदना चाहता हूं नए कपड़े for my entire family, अपनी पूरी फैमिली के लिए, on the coming Sunday. All right? On this coming Sunday, on the Sunday to come, जो संडे आने वाला है, ठीक है, उस संडे को मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है? आई हैव टू परचेज न्यू क्लोथ्स. नाउ हियर टू रिप्रेजेंट्स द एक्शन आई वांट टू. मुझे खरीदना है, क्या करना है? मुझे परचेज करना है. आई हैव टू परचेज न्यू क्लोथ्स फॉर माय एंटायर फैमिली. ओके, किसके लिए खरीदना है? अपनी फैमिली के लिए. तो परचेज का रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ. आई हैव टू परचेज माय क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स फॉर माय एंटायर फैमिली. ऑन विच डे? There is a specific day on which I want to purchase, and now that day is Sunday. So maybe on Sunday I'm free, I'm having a holiday. So on that day I have to purchase new clothes for my family. So the words like to, for, and on establishes the relationship of noun, pronoun, and other verbs and phrases in the sentence with each other. These are linking words, and that is why they are known as prepositions. Okay, I hope I'm clear till here. Let's study and let's learn more about the kinds of prepositions.
नाउ द वेरी फर्स्ट टाइप इज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। अगर हम प्रिपोजिशन की बात करें तो पहला जो टाइप है वो है टाइम का, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, लाइक इट इज यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। Now the preposition of time is used to show. Preposition of time always expresses or indicates the time when something is happening. For example, we will be meeting on Friday. हम लोग फ्राइडे को मिलने वाले हैं। सो किस दिन, ठीक है, दिन की बात कर रहा है, स्पेसिफिक डे की बात कर रहा है। मीटिंग तो होने वाली है बट किस दिन होने वाली है? ऑन फ्राइडे, राइट? स्पेसिफिक डे। So that is why this action is going to be performed on Friday. The meeting will happen on Friday. So it is linking the meeting and the Friday. ठीक है? It is linking the action to a particular day. That is why this is called a preposition. Next sentence अगर हम देखें, the office will be closed from 9 p.m. to 9 a.m. ओके, तो ऑफिस का जो है उसके बारे में बता रहा है, उसका रिलेशन बता रहा है कि क्लोज्ड कब से कब तक रहता है ऑफिस। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 9 पीएम टू 9 एएम, 9 बजे से रात को सुबह 9 बजे तक, मतलब रात के 9 बजे लोग चले जाते हैं, रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक जो हमारा ऑफिस है वो बंद रहता है। अगेन, सो ये जो एक्शन है, क्लोजिंग एक्शन या ऑफिस के बारे में बता रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि क्लोज रहता है 9 से 9, रात के 9 से सुबह 9 बजे तक, ठीक है। अगेन, इट इज अ preposition of time which is indicating about a specific time when the office closes. Last sentence हम देखते हैं, we have been asked to work from home until the end of June. हमें बोला गया है घर से काम करने के लिए, work from home until the end of June, जब तक जून खत्म नहीं हो जाता। सो हमारा एक्शन जो है हमारे बारे में बताया जा रहा है। ओके, इट इज showing when something is happening, till which month or until when you have to work from home, right? Until the end of June. Now here until is a word which is linking the subject to the object of the sentence, and it is showing the working of a particular person, working of some people till what month, right? So again, linking word, it's a preposition of time. So the words like on, from, to, until, we describe these words as preposition of time, right? So I hope this is clear. Let's have a look at the second type. The second type is preposition of place. Okay, now it indicates the place or position of something. Preposition of place indicates the place or position of something. It tells you the relation between noun, pronoun and the other words in the sentence or the other object in the sentence. For example, if I say the cat was lying under the table, जो बिल्ली है वो टेबल के अंदर नीचे बैठी हुई, अंडर द टेबल मींस नीचे बैठी हुई है। Now, in this sentence, the relation of cat is established with the table. And what is the linking word? कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है या लिंक कर रहा है? दैट इज अंडर. सो अंडर इज द वर्ड विच इज लिंकिंग द रिलेशनशिप ऑफ cat with the table. It is defining the relationship of cat with the table. So that is why it is called preposition of place. Next sentence, if we see, the dog jumped over the fence. Okay, the dog jumped over the fence. डॉग है वो फेंस के ऊपर से कूद गया। नाउ अब जो डॉग ने जंप किया तो रिलेशनशिप क्या है फेंस के साथ, उसका क्या रिलेशन है? वो फेंस के अंडर से जा रहा है, ऑन जा रहा है, ओवर जा रहा है, कैसे जा रहा है? सो ही इज जंपिंग ओवर द फेंस, वो फेंस के ऊपर से कूद के जा रहा है। अगेन द वर्ड ओवर डिनोट्स द प्लेस, ओके, वेयर with reference to the fence, what is the position of or what is the place of the dog? So the word over is nothing but preposition of place. Last sentence है, she was hiding behind the door. वो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी. She was hiding behind the door. Now here in this sentence, the relation of the girl is in reference to the door. What is the relation of door and the girl? Now she is behind the door. वो दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी है.
सो जो बिहाइंड है वो बता रहा है इसके पोजीशन के बारे में और डोर के पोजीशन के बारे में, राइट? द प्लेस, ओके, और द पोजीशन ऑफ समथिंग is the word which describes is known as preposition of place. So same in these sentences, the words like under, over and behind, these are the three words which gives the position of the subject in relation to the object which is being talked about in the sentence. So that is why these are known as prepositions of place. I hope yahan tak ka concept clear hoga. Let's have a look at the next kind. Now, this is again one of the most important kind of preposition, that is prepositions of direction. It is used to denote the direction in which something travels or moves. So according to the definition, अगर हम definition की बात करें तो preposition of direction ये वो words होते हैं जो हमें किसी खास डायरेक्शन के बारे में बताते हैं या जिस डायरेक्शन में मूवमेंट या एक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं, राइट? For example, the frog jumped into the water. Right now, here the relation of frog with respect to water is what? अगर हम फ्रॉग और वाटर की बात करें तो फ्रॉग तो जंप कर रहा है, बट कहां जंप कर रहा है? पानी में जंप कर रहा है. वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ही इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, नाउ डायरेक्शन क्या है उसका? इनटू द वाटर, पानी में जंप कर रहा है. अगेन this word into is nothing but a preposition of direction which is indicating its movement towards a specific point or towards a specific object. The girl ran towards her father the moment she saw him. बच्ची जो है अपने फादर की तरफ दौड़ी जैसे उसने अपने फादर को देखा. नाउ उसके दौड़ने का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा? क्योंकि उसने अपने फादर को देखा तो जाहिर सी बात है अपने फादर की तरफ दौड़ी. सो हियर टुवर्ड्स वर्ड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन टू विच द गर्ल इज रनिंग, राइट? नाउ द गर्ल ran towards her father the moment she saw him. Okay, now this girl ran towards her father. किस तरफ दौड़ी वो? किधर को दौड़ी वो? अपने फादर की तरफ दौड़ी, राइट? वो इधर उधर नहीं दौड़ी. So the word towards is giving you the exact direction where this girl is running, and the direction is towards his dad. So on seeing her dad or her father, she is running towards her father. So the word towards is preposition of direction. It is giving you the direction towards. आकाश lives across the street. वो आकाश जो है वो स्ट्रीट के उस पार रहता है, क्रॉस रहता है, रोड पार करके, राइट? तो अगर कोई डायरेक्शन पूछे कि कहां रहता है तो हम ये कह सकते हैं आकाश जो है वो स्ट्रीट के उस तरफ रहता है. डायरेक्शन बता सकते हैं. अगेन across is the word which is giving the direction in the sentence. Across means रोड के उस तरफ, ठीक है, denoting the direction. So that is why the words like into, towards and across gives you the exact direction in which something travels or in which the action is taking place. Now these words like into, towards, across, these are known as prepositions of direction. So I hope कि यहां तक का आपका concept clear हो गया होगा, ठीक है? These are very simple concept. अगर आप इसको जितना sentences बनाते जाएंगे, 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20, 25, 50 sentences, जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, स्लोली एंड स्लोली आपके अंदर से डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे. एंड जैसे एक टाइप है उसके ऊपर आपने 10 से 15 सेंटेंस बना लिया, प्रैक्टिस कर लिया. दूसरा टाइप है उसके ऊपर आपने 15 से 20 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिया. स्लोली एंड स्लोली द कॉन्सेप्ट विल बी, यू विल बी क्लियर्ड अबाउट इट and you will gain what it is all about. Okay, so let's have a look at the next one. Preposition of location. अगर हम बात करें preposition of location की, what is it? Now it is said it is employed to denote the location of a particular object. Now it is employed to denote the location. ये preposition किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में हमें क्या करता है? बताता है, ठीक है? It denotes about the location of a particular object. For example, अगर हम example देखें, I will be spending my vacations at my farmhouse. Now, the word at here gives the exact
location to where I will spend my vacations. Okay, and that is my farmhouse, and that is my farmhouse, right? So I'll be spending my vacations at my farmhouse. Now here the word at is nothing but a preposition of location. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 10 years. वो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों से रह रहा है, राइट? सो इन इज गिविंग यू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर ही स्टेइंग. ओके, वो लोकेशन बता रहा है एंड लोकेशन इज ऑस्ट्रेलिया. अगेन द वर्ड इन इज अ प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन. And the last sentence says the dog was lying on the floor since morning. डॉग है, वो मॉर्निंग से फ्लोर पर क्या कर रहा है, लेटा हुआ है. इज लाइंग ऑन द फ्लोर सिंस मॉर्निंग, बट इट इज टेलिंग यू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर ही इज लाइंग. द डॉग इज लाइंग, राइट? सो इट इज लाइंग ऑन द फ्लोर. So the words like at, in, on, which gives a specific location about a particular object, is known as preposition of location. Next we have preposition of spatial relationships. Okay, this is again one important preposition. It is used to denote an object's movement away from the source or towards the source. ये preposition हमें ये बताता है कि object का relation किसी source के साथ क्या है, towards है या away है, right? जैसे नेहा इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. नेहा जो है वो दीवार के सहारे खड़ी है. सो दीवार से उसका क्या रिलेशन है, दीवार के नजदीक है या दूर है. अगेंस्ट द वॉल मींस शी इज लाइंग लीनिंग अगेंस्ट इट, उसके ऊपर वो टिकी हुई है या ऐसे सहारे लेकर खड़ी है. द वर्ड अगेंस्ट अगेन इज अ गिविंग स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द नेहा एंड गर्ल, सॉरी द वॉल. राहुल वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री. अगर हम बात करें सेंटेंस में, राहुल वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, राहुल जो है वो पेड़ के नीचे बैठा था. तो राहुल और पेड़ के बीच का जो लिंक है वो क्या है, बैठने का. इट इज अंडर, ही इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, राइट? सो व्हाट इज द रिलेशनशिप टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट इज ही इज सिटिंग बीनीथ द ट्री, वो पेड़ के ठीक नीचे बैठा है. Spatial relationship, again it is showing its object's movement towards or away from the source, right? Now we spend the evening walking around the lake. Third sentence अगर हम देखें, we spend the evening walking around the lake. हमने evening spend करा कैसे, लेक के चारों तरफ घूमते हुए. So these are certain words which gives or denote an object's movement away from the source or towards the source, and that is why they are known as preposition of spatial relationships. And the last is prepositional phrases. Now what are prepositional phrases? They are nothing but a group of words which have preposition and which do not give any exact sense to it, but acts like a preposition. For example, if I say, see to it that they reach the venue on time. Please see to it that they reach the venue on time. On time मतलब प्लीज ये चेक करो कि वो लोग जहां पहुंचने वाले हैं वो बिल्कुल सही समय पे पहुंचे, ऑन टाइम पहुंचे, राइट? अगेन हियर ऑन टाइम, टू वर्ड्स कंबाइनिंग, ओके, एंड दे आर एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. मेक श्योर शी फिल इन ऑल द फॉर्म्स एट वंस. मेक श्योर, प्लीज इंश्योर करो कि वो जितने भी फॉर्म्स है वो एक साथ सभी भर दे, ठीक है? एट वंस अगेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, okay, that is affecting its object and it is denoting, it is giving idea about how she has to fill the form. All right, so these kind of words which are combined with prepositions, they act like a preposition and are called prepositional phrases. The last sentence is the medicine you asked for are out of stock. जो मेडिसिन आपने पूछी थी या जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, दे आर आउट ऑफ स्टॉक, वो स्टॉक से बाहर है, राइट? सो हियर अगेन आउट ऑफ स्टॉक, ग्रुप ऑफ 3 words having prepositions in it is known as prepositional phrase. Again, it is a combination which is affecting and is telling, acting like a preposition in a sentence, giving you information that they are not in the stock, they are out of stock. So these kind of words which are linked or which contain preposition and they have one or two words with them, they act as a phrases and they are known as prepositional phrases in the sentence. So that's all for today. Thank you so much for watching this video, and I hope the core concept with module 3 of parts of speech, that was verb and preposition, is clear,
And I hope you will, when you practice more and more of these sentences and these kind of types of verbs, adverbs and prepositions, the concept will be more clear. So that's all for today. Thank you so much for watching the video, and we will meet in the module 4 of parts of speech. Thank you so much.